Very good morning, Pratap. Aditya, very good morning. Avani, good morning. Krishna Reddy, very good morning. Are you able to hear me, students? Good morning, ma'am. Yes, Good we are morning. able to. Yes, ma'am. Just a second. Give me one more second, please. Okay, just one more thing I want to know. The background is it too much of light or is it fine? It's fine, ma'am. It's fine, sure? Yes. Okay, give me one more second. Huh? I'll just join. No, There is- light focusing, ma'am. Is there a problem in seeing me? Focus problem is There no problem, but light focusing. okay, give me 1 second. I'll come back. Krishna, is this better? Yes, ma'am. I can't do anything with this side of a light because there is nothing that can help us. I hope we can manage, right? Shall I start, Krishna? Hello? Yes, ma'am. Please start. Ma'am, Thank you. Krishna. Yes, you have to say something, Krishna? no, ma'am. Okay, fine. Fair enough. Okay. Okay, so today we are going to talk about something which is a continuation part which we had been doing yesterday, if you remember, all of you. But before that, a warm welcome to all of you. You all have signed with Hello English. And my name is Veena. I am the one who is going to be assigned, rather I'll say I'm assigned with you people for a little longer time. So today, this is a strong suggestion that I'm there with you from 11 to 12, and there is one more hour that I'll be with you people. So there are some little changes coming from now, I'll update you about. But for now, I'm here for 11 to 12. In between, I'll let you know the continuation timings as well. As we had been discussing yesterday, if you remember, we were talking about pronouns. I think most of you must have, it must be very, very clear with all of you. So it's again a next detailing part of understanding of the pronouns that we are going to talk today. What is this and how we go about it? We'll take the help of the slides and accordingly I'll explain that. But before that, जो मेरे साथ आज जुड़े हैं उन सबको इतना जरूर बताऊंगी कि मेरा नाम वीना जरूर है और मैं 11 से 12 जरूर आपके साथ हूं, पर घबराइए नहीं। जब भी मैं अंग्रेजी बोल रही होती ना, थोड़ा इंतजार करिएगा कि आप यही चीज रिपीट करके ये हिंदी में बोलने वाली है। तो मैं बताना ये चाह रही थी कि जो हमने अभी बात करी थी प्रोनाउंस की, ये जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे ग्रामर की अंग्रेजी में, और ये सभी भाषाओं में होती है। सिर्फ उनके जो नाम है वो हमको उसी हिसाब से याद रखने पड़ेंगे। तो हम जिस प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे थे कल, आज भी हम उसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और प्रोनाउंस के बारे में याद रखेंगे। एक जरूरी बात जो मैं जरूर आप सबको कहना चाहूंगी कि प्रोनाउंस हमेशा जगह लेते हैं नाउन्स की, वो उनको रिप्लेस करते हैं नाउन्स को। तो हम जरूरी नहीं है कि नाम ही बोले, उसकी जगह जो प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वीना का है तो शी कह सकते हैं, आदित्य का है तो ही कह सकते हैं, लैपटॉप है तो इट कह सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। उसके अलावा जब हम खुद को रखते हैं बीच में और 3 लोग और हैं तो वी, और जब हम खुद का नाम नहीं है और बाकी सबका नाम ले रहे हैं दे। ये बताने का कारण ये है कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउंस और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस याद होंगे जो हमने कल किए थे। I hope all of you remember that yesterday we were dealing with the first person, second person, third person subject pronouns, and we were talking about the object pronouns for the first person, second person, and the third person. The common section of the subject pronoun and the object pronouns we had was you and it. Rest changes as we saw it, I and he and she and us, the changes that we saw when it becomes the object pronouns there. So I, the first person there when we're talking as a subject.
A little detailing for all those who have joined for the first time. I just want to let you know that whenever we make a sentence, in this particular sentence, you will be having a subject. And that subject is referring to, it's trying to talk about something. It is giving an information about something. So whenever an information is given, there is a receiver. There is somebody who's to receive that, who's going to receive the action. I play what? Football. So what did I do? I put a subject there, I, and then I gave an action to that, because a sentence will never make any sense if the verb is missing there. So you need to have a subject and a verb. And the moment there is a receiver, I play football, that football becomes my receiver. That's an object there. Okay, so that's a subject, that's an object, that's a verb, that's a sentence. If in a sentence you do not find a verb, or in a group of words, when you do not find a verb. Now, in sentence, you will never have it's not possible that you make a sentence without a verb. So I would say 3-4 words combined together, but it doesn't have any verb. That falls in the category of phrase. Why am I telling you all this? Because all this is connected to what we are going to learn today. So just gear up yourselves, students. If you haven't got your notepads, just go and fetch it. Sit with the notepads and get ready. Let's start. We've already started. I just wanted to make a little base of that, and something that is important, we should go ahead with that. So we are going to talk about reflexive and reciprocal pronouns. But before that, Sakshi, Laiba, Asma, Vandana, Rabia, this is morning here, Rabia. Vinay, Vandana Sharma. Oh, that's my friend's name, Vandana Sharma. Very good morning, Vandana. Laiba Hayat, Disha Shrivastava, very, very good morning. Shyam, Ransom Christie. Are you joining me, Ransom Christie? Please come again. Come here. Noor Islam, very good morning. Nishu and rest. Everyone, those who have joined, please don't feel left out. Seema and Sumit, very good morning. I am just requesting all of you. See, जो भी मेरे साथ प्रो पे जुड़े हैं या चैट पे जुड़े हैं, अगर मैं आपका नाम नहीं ले पा रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान नहीं है. इट्स एक्चुअली हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, तो उसको देखते हुए हमको थोड़ा सा टाइम के साथ चलना जरूरी हो जाता है. तो कभी हो सकता है कि मैं मिस कर जाऊं. Apologies for that. So we are here, we're talking about reflexive and reciprocal. Reciprocal and reflexive. Let's start. What is a reflexive pronoun? एक ऐसा स्पेशल काइंड का प्रोनाउन है. मतलब है तो इसको स्पेशल क्यों दिया ना, क्योंकि रेगुलर जो हम प्रोनाउंस काम में लेते हैं वो ही, शी, इट के बारे में हम सीख गए, समझ गए, हमने समझ गया अस लगाना है, वी लगाना है. बट रिफ्लेक्सिव, समथिंग दैट रिफ्लेक्ट. क्या चीज को रिफ्लेक्ट करेगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज दैट्स द ओनली 3 sections of thoughts we express ourselves with. So it's basically, what is it talking about? A reflexive pronoun is a special kind of a pronoun that is usually used when the object of a sentence is the same as the subject. अब आप कहेंगे कि मैम सेंटेंस पढ़ दिया आपने, समझाया नहीं. यही तो मैं समझाना चाह रही थी. जब हमने बात करी कि कल हमने क्या पढ़ा, हमने सब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा. सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, अभी अभी हमने समझा. सो एक वाक्य के अंदर जिस विषय में आप बात करते हैं वो सब्जेक्ट हो गया, और जो रिसीवर है वो ऑब्जेक्ट है. लेकिन दोनों ही केस में अगर मैं इस्तेमाल में कर रही हूँ कि एक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट भी जो है वो प्रोनाउन है और वही उसका ऑब्जेक्ट है. जैसे मैं खुद पढ़ाती हूँ, मैं खुद नहाती हूँ, मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ, मैं खुद स्विमिंग करती हूँ, मैं खुद जूता पॉलिश करती हूँ, मैं खुद अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ. तो ऐसे के अंदर जो सब्जेक्ट है वो कार्य खुद ही कर रहा है. तो वो क्या हो गया, वो एक खुद के ही इमेज को रिफ्लेक्ट करता है. What are we talking here about? We are talking about here a sentence which is actually trying to reflect with the subject there. Subject, I just talked about. In a sentence, you will have a subject, a verb, and an object. So when you have a subject, and the subject is itself the object, the doer of, actually, the subject in itself is the doer. That means the action is being done by the subject himself, itself, myself. Getting the point? So when the subject in itself is the doer of the object, you require the reflexive pronoun. As we can say, each personal pronoun. Personal pronoun means
We did each personal last class, yesterday's class. Personal is when I'm talking about he, then I'm talking about, sorry, I, the first person, second person, you, and the third person will be he or she, whatever we are talking about. I hope you remember. I, पहले मेरा नाम, मैं खुद को पहले रखती हूँ, फर्स्ट पर्सन है. सेकंड पर्सन कौन है? जिससे तुम बात कर रहे हो, आमने सामने वाला, वो फोन पे हो सकता है, जिससे तुम बात करते हो, वो सेकंड पर्सन है. थर्ड पर्सन कौन है? जिसको तुम नाम से बोलते हो. Tripti, Jagjit and Renu are in the class. They. Okay, so ये थर्ड पर्सन में आ गया आपके लिए. So यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस आपके हैं I, you and she. Okay, has its own reflexive. ये आज आपको याद रखना है. So if you have written it in your notepads, first और second आपको जब मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कल की क्लास में बताया था, यहाँ पे जब आप चाहें तो इसमें एड ऑन कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. I के लिए myself. You remember yesterday I had told Sumit, एक बार मैंने उसको स्टॉप करके एक क्लास में कहा था, Sumit, if you remember, कि यहाँ ये my क्या कर रहा है. If you remember, there was one section yes, there. याद आया? So यहाँ पे पोजेशन बोला था आपने. तो पोजेशन, अब आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, यहाँ पोजेशन नहीं है, यहाँ आप सेल्फ लगा के उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो. तो आई के साथ आप लगाओगे माई सेल्फ, यू के साथ लगाओगे योर सेल्फ, और आगे हम देखते हैं इट के साथ, देम के साथ क्या लगता है. लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे आप स्पेलिंग का याद रखिएगा, बिकॉज यू जो है, सो व्हाट इज दैट वी हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर आई विल बी माई सेल्फ. For you, it will be you, yourself. Y-O-U-R-S-E-L-F is for singular. Y-O-U-R-S-E-L-V-E-S is for plural. इसका ध्यान रखिएगा. I accidentally cut myself with a knife. मैंने गलती से खुद को ही चाकू से काट लिया. अब काम भी तुम्ही ने किया, उसका जो एक्शन जिसने रिसीव किया वो भी तुम थे. That's the place where reflexive pronoun works. Here the person doing the action, reflexive pronouns point back to the subject. I've already explained you this. Let's go to the next and understand this. Reflexive pronouns, please write it somewhere, students. I'm seriously saying it. It's going to be very, very helpful. Bharat said, thank you for joining us. Mir Ghazi, Mayuri, Asif, Uday, Meena, thank you and good morning. Disha, thank you for the don't worry. Laiba, Hayat, good morning. This is a lot of students. Vashne, Punita, you're not joining. I can see that you are there. Seema, thank you for joining. Pratap, very, very good morning. Thank you for that speaker. The little error of the spelling is there. F-I-R-S-T. वो type करते समय हो जाता है. मुझसे भी होता है कई बार. I know you very well. Okay. So when we're talking about reflexive pronouns, कौन-कौन से हैं? Myself. Myself किसके साथ चलेगा? I के साथ. Yourself, you के साथ. He के साथ, himself. She के साथ, herself. It के साथ itself, oneself, ourselves, yourselves, themselves. All these, what we call it, reflexive pronouns are used where? As an object. इस बात को पकड़ के चलिएगा कि ये सारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, इनका स्टेशनड जगह, इनको आप प्लेस कहाँ करेंगे? Where are we going to use them? We are going to use them where we put the object there. You can't say myself, myself, it's a wrong English. Myself, Veena. It's a wrong English. People do use it. No, I am Veena. That's the right English. That is the right way to place it. So all these reflexive pronouns take the place of the object in a sentence there. He cut himself while chopping vegetables. She looked at herself in the mirror. उसने खुद को देखा. उसने खुद से अपने आप जब सब्जियां काट रहा था, उसने खुद को काट लिया. We use a reflexive pronoun as a direct or indirect object. Direct and indirect object मतलब object is the same as the subject of the verb. Direct or indirect, देखो इसको हम sentence के through help करते हैं. Be careful with that knife. You might cut yourself. Now what is this? यहाँ पे जो somebody that you are talking to, somebody that you are referring to is actually having a direct impact there. आप उसको सीधा सीधा बोल रहे हो कि भाई तुम चाकू को ध्यान से काम में लो, नहीं तो तुम खुद काट लोगे खुद को. तो आपने डायरेक्टली उसको ये चीज बोली है, right? Would you like to pour yourself a drink? यहाँ पे what are we doing here? Here the direct object is drink.
as it is getting poured, and yourself is the indirect. Understand the second part of the question, the understanding of the reflex. देखो ये जो second part है ना, it's basically where we're talking about the indirect pronouns usage there, reflexive pronouns usage. What happens, the application of our language sometimes have to be very, very formal. मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या चाय खुद बनाना पसंद करेंगे जब वो ट्रे लग के आ रही है, वुड यू लाइक टू हैव इट योरसेल्फ और वुड यू लाइक टू हैव द ड्रिंक योरसेल्फ. अब बात यहाँ किसकी कर रहे हो, आपने डायरेक्टली ड्रिंक की बात करी, लेकिन क्या आप खुद पोर करना चाहते हो या मैं कर दूं आपके लिए? इट्स अ वेरी फॉर्मल थिंग. आप किसी फॉर्मल इंसान से ही पूछोगे, बिकॉज यू नो डोंट नो द पर्सन्स चॉइस, उसको कितना चाहिए, क्या मिलाना चाहता है. एंड सी एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस. आई वुड लाइक टू डू इट माई सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल खाना जैसे हम बुफे में जाते हैं तो हम नहीं कहते हैं किसी को, कई बार आप कहें तो मैं आपके लिए थाली लगा के ले आऊं, तो आप किसकी बात कर रहे हो, खाने की बात कर रहे हो ना, तो इनडायरेक्टली आप उससे पूछ रहे हो. इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की जैसे भी काम करते हैं. अगेन एज आई सेड, ऑलवेज रिमेंबर द एप्लीकेशन पार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज. सो वुड यू लाइक टू पोर योरसेल्फ अ ड्रिंक? हियर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ड्रिंक. They had to cook for themselves. They themselves. Now here they is plural. Look at THEMSELVES. याद रखिएगा, SELV जब भी आएगा वो प्लूरल है और SELF आ गया वो सिंगुलर है. Just remember this part. Here we are talking about the subject which is supposed to be plural. So here we are talking about the object. It is again plural, right? The object of the reflexive pronoun remains the plural क्योंकि हमें spellings को ध्यान रखना है. Usage part there. Even the pronunciation, themselves, for and were. The sound also has to be taken care of. So they had to cook for themselves. Themselves is the object here. And where is the preposition here? For. So here is the preposition that we are talking here about, for. Okay. Let's go to the next and see this out. We are also using reflexive pronouns. Where do we use them? With the preposition by. Passive form में जब हम काम में लेते हैं ना, you remember that passive form, the active part changing into the indirect speech of saying it, the passive form there. Past form काम में लेते हैं, participle काम में लेते हैं. With the preposition by, when we want to show that someone did something alone and or without any help. She lived by herself in the palace. So here the usage of by and here the usage of for. These two prepositions also help whom? The reflexive pronoun to express himself. And that's what I said, prepositions connect the thoughts there. दो सोच को जोड़ने का काम कर देते हैं, उस दो चीज को कनेक्ट करने की बात करते हैं. एक पर्टिकुलर हमने समझा जरूर है प्रपोजिशन का, बट ये एक साधारण सिंपल तरीका है कि वो उसकी पोजीशन को शो कर देता है, प्रपोजिशन हमारे लिए. तो यहाँ पे वो she lived by herself, she herself in the by is working and helping us out to show that किसी ने वो काम खुद से ही किया है. The kids got dressed by themselves. Kids, KIDS plural है, ध्यान रखिएगा. थर्ड पर्सन आ गया और इसीलिए वहां पे हमने themselves लगाया है. To emphasize the person or a thing we are referring to. अगर हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, उदयपुर itself is a quite small town. What are you saying? Rahman, he himself is very naughty. He himself is very talkative. He himself is very polite. He himself is very helpful. मतलब तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैंने उसको सिखाया है कि लोगों की मदद करो, आराम तरीके से बात करो, वो तो उसकी खुद की आदत नहीं शुमार है. So, जब हम किसी को एम्फसाइज करते हैं, किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को, भूलिएगा नहीं प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह ले रहा होता है. सो नाम किस किस का होगा? नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग. ओके, सो यहाँ पे पर्सन और थिंग को जब वो
खुद को ही रेफर कर रहा होता है. अमिताभ बच्चन himself sang the final song. Okay, so उसने खुद ने ही वो चीज करी है. That's there also we use the reflexive part there for emphasizing. I baked the cake myself. अब obviously ये तो हम कई बार काम में लेते. क्या बात कर रहे हो, मैंने खुद ने सफाई करी. क्या बात कर रहे हो, मैं खुद ही पढ़ाने आ रही हूँ. Okay, so that is something which we have to understand and talk here about. Okay. 1 second. Okay. For the specific verbs, enjoy, hit, resign, apply, absent, and avail. Now, this is something a little tricky. Tricky in the sense that you have to remember that these are the 5 verbs which from where also we can use the reflexive pronouns. Jane hid himself behind the tree. So जैसे ही आपने HID जो कि verb है, enjoy जो कि verb है, resign verb, apply verb, absent verb and avail verb. इन सबका जैसे ही आपने इस्तेमाल किया है, आप subject के हिसाब से accordingly you are going to use the reflexive pronoun. So these are the 4 different ways where we can use it. I am enjoying myself now. I am enjoying. I am enjoying myself. So you require the be form, the being form there. You require the ing form there. So all these applications and things are important for us to understand. Let's go to the next. I have seen your question there. I think this child who has typed this. 1 minute. Sona Malik, I have seen your question. I'll just come back. Infosys president resigns. Okay, is that so? That's a news for us. Will we talk with me? Will someone talk with me in English? Farhan, I am speaking in Hindi and English both. But still, if I'm making an error, please tell me. I'll surely rectify it. When not to use reflexives. Now, this is also something. See, in any language or in anything, हम घर में भी कुछ do's and don'ts बनाते हैं. ये हमारे घर में allowed है, ये हमारे घर में allowed नहीं है. So इसमें भी reflexives के अंदर ये don'ts है. इसको आप नहीं काम में ले सकते. We use personal pronouns, not reflexives, after prepositions of place. हम personal pronoun, he had a bag besides him. अब आप यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन काम में लेंगे, हिमसेल्फ की जरूरत नहीं. ये तो आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर यूजिंग इट, यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड. आई डोंट नीड टू हैव अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हियर. A simple pronoun where I'm using my personal part, I have to use it. He had a bag besides him, not he had a bag besides himself. He was carrying his bag himself. Then I can use. But not here when we are trying to talk about the preposition of. When I'm trying to talk about preposition of place, beside, उस place preposition है जो place की बात करता है. हम for या by के साथ में reflexive लगा सकते हैं. We use personal pronouns, not reflexives, after with. Again, something that we need to remember when it means accompanied by. She had a few relatives with her. Accompanied with हम काम में लेते हैं ना with. Would you like to come with me? It is trying to accompany. वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे. Before I go ahead, and from here students, from Aditya, Avani, Bharat Seth, Kiran, Krishna Reddy, Manju, Patel, Pratap, Seema, and Sumit, and all the students on the chat, get ready. From here, you have your exercises. But before that, Sona is asking me about something which we call as oneself. I said for the pronoun reflexive part there, oneself. See, first I'll talk about the sentence here that makes your life easy. The idea of publishing a book oneself. oneself का मतलब क्या है? oneself एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा शब्द होता है जो एक इंसान, एक इंडिविजुअल के लिए, खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब हम हर जगह I और you और we नहीं लगा पाते. कई बार ऐसा होता है कि कोई एक इंसान कोई भी कर सकता है. One can do the work himself. No, one can do the work individually.
One can do the work oneself. The book was the idea of publishing a book oneself. मैंने किताब लिखी और मैंने ही उसको पब्लिश करी, ये एक तरह की सोच है. तो यहाँ जब हम किसी को स्पेसिफाई नहीं करते हैं ना, when we don't specify the first, second and the third person, I'm talking about an individual. एक particular कोई भी individual की बात कर रहे हैं जो जिसका कोई नाम नहीं है. It's just one. It's one. There we are using oneself. Also, if I can give you no, oneself, no. That's not the way we can use it. वो फिर थोड़ा डिटेल में चला जाएगा. I will have to go back to the class. I hope आप समझ पा रहे हैं मैंने जो अभी आपको कहने की कोशिश करी. हाँ, लेकिन by oneself, yes, that what you are asking can be done there. आइए next पे चलते हैं and try this out. Students, get ready. Manju Patel, you will start today. Come. Manju, Yes, good ma'am. morning. Yes, ma'am. Good morning. I will bring my brothers along with me. Brothers कहाँ है बेटा? Manju, don't make mistake. I But will. आराम से पढ़ो. brother है ma'am. Yes, नहीं लगा. Okay, I'll bring my brother along with me. Great. Thank you so much. From Nityanand, Prachi, Pratap, Seema, Krishna and others have given the correct answer. Pratap, will you please come? You can learning नहीं आएगा फिर लाइवा वहाँ पे. You can learn English yourself. ING form is not required. Okay, Pratap. Yes, ma'am. Please come. He made her sit in front of him. Shabash. Can you tell me the reflexive pronoun is for which pronoun here? He तो Shabash. Very good. subject और him object. हाँ, ऑब्जेक्ट है पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. हम ऐसे बोलते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. Okay. जिनको नहीं समझ आया है ना. थैंक यू प्रताप. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंड ट्राई दिस आउट. आइए. Farhan, Veena and other ma'am are here to teach us. So then in that case, Farhan, comma लगा देते राबिया वहाँ. Farhan, comma, Veena and other ma'am are here to teach us. Other ma'am. Other teacher would be a preferably better there. Okay. Yes, Krishna Reddy, please come. Rabia, Sona, Evelyn, Tripathi, Disha, Seema. Okay. Come. The children, Hmm? ma'am, the children got dressed by themselves. Okay. So subject here is? Subject here is children. Object Okay. here And themselves. which, okay. And this is reflexive pronoun for which word? Children. Shabash. Very good. Next. आ जाइए. Aditya, get ready. Please do not edit anything. The Excel sheet is mine. Okay. Please do not edit anything. That Excel दोबारा बोलिए. Excel. हाँ. Seat नहीं है. Sheet. SH. Excel Sheet. sheet. जैसे हम is mine. sheep बोलते हैं ना. Sheep. वैसे sheet. Okay. आदित्य ट्राई करिए. The Excel sheet is mine. Seat nahi, sheet is mine. The answer is correct. Here the reflexive pronoun is mine because you are referring to that section. Mine. Okay. Next. I have Avni with me. Can you come please, Avni? Nakum? Can you read this for me, Avni? Jaldi aa jaiye, please. I think she's busy. Kiran? Yes, ma'am. Good Good morning, ma'am. morning, Kiran. Come. Yes, ma'am. Our graduation party was brilliant. Everybody really enjoyed themselves. शाबाश. So यहाँ पे बता पाओगे कि किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? Which pick up the word themselves. Themselves, ma'am. हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है themselves, but किसके लिए रिफ्लेक्ट कर रहा है बता सकोगे? Everybody. शाबाश, very good.
Squads, Sona, Mohammed, Tripathi, Shrishti, Tripathi. Thank you, And ma'am. another Shrishti. Thank you so much. Thank you for coming. Aye, let's try this out. Seema. Seema. Yes, ma'am. Good morning, Seema. Would you please come? Uh, Do the needful. पहले इसको कर लीजिए. कोई जल्दी नहीं है. Take your time. yeah. Sorry, ma'am. Actually, I went outside, so that's why I became late. It's okay. So Can first you one please- is first one is right. We Mhm. turned around and saw a strange animal behind us. Okay, we turned around and saw a strange animal around us. So the reflexive pronoun is which is the reflexive pronoun? Ourselves. Okay. Ourselves is the is the reflexive reflexive pronoun. Shabash. And what is us doing here? I think it's ma'am. Sorry, Object. ma'am. I got confused. Object, I'll tell you. Yeah, This is object personal Yeah. pronoun because it's taking a place of an object. It's a personal pronoun for object, but it's taking a place of, it's an object pronoun, personal pronoun, okay? And here we have Yeah. got we, which is working as a subject personal pronoun. That's the only thing, because it's the three things that we're going to work with: subject, object, reflexive. Okay? And reflexive will always take the place of objective. So Yeah. objective name, object, sorry. I said the wrong word there. Object. Okay. Going ahead, let's call Sumit. Please come, Sumit. Yes, ma'am. You don't have to assist me. I can help myself. Thank you, Sumit. Absolutely correct. I and myself, I think, Sumit, I'm right. Yes, ma'am. Okay, chali. Next pe aaiye, please come. Sona Malik, us, Disha Srivastav, continuously these children are giving, I am in library. Okay, Avni, I really respect that and I'm sorry I bothered you. Thank you for letting me know that. Squads, yes, squads, am I right? Noora Nizam, Uday Meena, yes, the answer is correct. Sona Vinod. Sona Vinod has given us the answer. Yes, thank you for this answer. Malik, Laiba, and this is, I'm taking Sana Vinod's answer, and Sona Malik and Disha Srivastav. All three have given me. We went for a horror movie and were shivering with fear in the middle of it. So movie को हमने it के लिए personal pronoun के लिए काम में लिया है. Reciprocal. आइए, let's understand the reciprocal pronoun. Karan and this is Karan and Amy looked at themselves in the photo. So किसने किसको देखा? उन्होंने खुद को देखा. कहाँ देखा? किसने किसको देखा? करण और एमी ने देखा. So करण और एमी ने क्या देखा? खुद को देखा. कहाँ देखा? फोटो में देखा ना? Looked to themselves in the photo. So Karan and Amy are looking at a photo which features them. मतलब क्या है? हमने एक फोटो खींची, किसी ने व्हाट्सएप पे हमें शेयर करी वो फोटो, फिर हम घर के दो जने मिलके उस फोटो को देख रहे हैं. तो उस देखने में क्या है? उसमें था कौन? उसमें हम थे. हम खुद ही थे उसके अंदर उस फोटो में. तो यहाँ पे Karan and Amy looked at each other. Each other is a reciprocal pronoun. अब उन्होंने फोटो देखने के बाद खुद को देखा, एक दूसरे को. Each other, reciprocal, एक दूसरे को. Reciprocal pronoun, each other is a reciprocal pronoun. I'll just finish with reading part. A reciprocal pronoun is a pronoun which is used to indicate that two or more people are carrying out an action of the same type. We are helping each other. We are helping each other. We are learning. No, that will not come here. To indicate that two or more people are carrying out an action of same type, with both receiving the benefits of that action simultaneously. अब पहले आपने फोटो देखी, फोटो ने मिलके देखा, दोनों ने ही वो चीज देखने के बाद एक दूसरे की तरफ देखा. शीशे में गाड़ी में बैठे थे, sitting in the car on the driver's seat, Sona was driving and on the back seat I was sitting. And हमने क्या किया? दोनों ने एक दूसरे को देखा, each other. So वहां पे हमारा reciprocal pronoun is taking a space.
We are going to, I'll explain you with the next part. So we have got two types of reciprocals, one another and each other. So these are only two reciprocals that we are talking about. तो हमने क्या क्या काम कर रहे हैं? हमने समझा कि नाउन की जगह लेता है प्रोनाउन. हम पहले बैक से चलते हैं, फिर रेसिप्रोकल आगे पढ़ाएंगे. So what have we learned till now? That in place of noun, it's a pronoun that's working. The pronoun can take the place of a subject, or it can take a place of an object. So you have got first person, second person, third person in the subject part there. And in the same, you have got the first person, second person, third person as a object. But in the first person where I'm talking about I as a pronoun, the subject part here, I for singular, I for second person, you for third person, we. Okay, but when we are talking about the subject, we would be changing it to us part there. You remains the same. We have got he, she, it. So these are some things that we have learned till now. Besides that, we have done the reflexive part here. So when you're doing things on your own, it's a reciprocal, it's a reflexive pronoun that's working there. And a lot of places, it's not necessary that I just use the reflexive pronoun because I've been told to do it. No, I can use my object pronouns as required. Here we are talking about the last type of pronouns that we have, which is talking about the reciprocal. एक दूसरे के साथ में reciprocate करना, reflect करना एक दूसरे को. उसमें सिर्फ दो ही हैं, one another and each other. One another, each other. So Matt and Benny love each other. एक दूसरे को. The lions started attacking one another. So here, these are supposed to be something that has to be written in your diary or in your notepads if you're writing it, that one another and each other are pronouns. ये जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी है because exams चल रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखो कि ये pronouns में ही आते हैं, लेकिन ये कौन से वाले pronoun में आते हैं? Reciprocal में आते हैं. Okay? Okay. Okay, so here, if I'm trying to understand in a further way, one second, there's some issue in my head. Okay, now I'm going ahead. I'm sorry for this disturbance. When you want to refer to two people, you will normally use each other. जब हम दो जनों की बात करेंगे, अंडरस्टैंडेबल है ना, हम each other रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही काम में लेंगे क्योंकि हम दो जनों की बात कर रहे हैं. जब हम बात करते हैं एक से ज्यादा की, the students in the lecture hall, you will normally use one another. जब एक से ज्यादा, so when we are talking about two, पहली बात तो एक में है ही नहीं. When you're talking about two, we are talking here about each other. When it is more than that, when it's a bulk, it's more people, more than two people are there, we are going to use one another. Let's help ourselves with the help of the sentences. So that will just follow after the slide. The pronouns each other and one another are singular entities. ये जानना क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि वर्ब के साथ हमें खेल खेलना पड़ता है, तो वहां हमारे को ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि अच्छा ये एक है. जैसे हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन्स विल ऑलवेज बी सिंगुलर, हियर आल्सो वन अनदर एंड ईच अदर, जैसा उनका शब्द है ना वन और ईच, ये सिंगुलर में काम आता है, इसीलिए हम इसको सिंगुलर ही रखते हैं. Therefore, when showing possession, the apostrophe comes before the S. Do you to admire each other's creativity? Now, because it's a pronoun, हम possession तो show कर सकते हैं ना, तो वहां possession को show करने के लिए apostrophe और S लगाना है. I'll just repeat reciprocal for all the students here. Reciprocal is basically talking about, is actually referring, I'll just go back to the slide. It's actually referring to something जो एक दूसरे के साथ में है. ये दो जनों के साथ हो सकता है, दो से ज्यादा जनों के साथ भी हो सकता है, लेकिन जब आप दो की बात करोगे तो ईच अदर की करोगे. जब दो से ज्यादा है तो वन अनदर की बात करते हैं. एक चीज हमें ये समझनी है. इसके अलावा वन अनदर और ईच अदर में वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर ही चलता है. आप उसमें प्लूरल फॉर्म नहीं ले सकते हो, वो सिंगुलर है. लेकिन अगर आप कभी भी प्रोनाउन है पोजेशन शो करेगा, उसमें भी काम आएगा, तो एपोस्ट्रोफी और एस लगेगा. ईच अदर्स, वो डायरेक्ट एस मत लगाना. लाइक व्हाट हैज हैपेंड, हमने देखा है कि स्टूडेंट्स चिल्ड्रन के आगे एस लगा देते हैं. सो वहां पे क्या होता है, फिर
चिल्ड्रंस कर देते हैं, लाइफ लॉन्ग हम चिल्ड्रंस ही बोलते आ रहे हैं, then we make a error there. That's not the right way to do it. So there, if you are trying to talk about a position, put an S there and move ahead accordingly. The pronouns each other and other are singular entities. I've discussed about it. Please go ahead and practice this. Come. Yes, Laiba Hayat, you can go. Bye-bye. And an announcement for Laiba also, students. I'll be taking just after this one more class, 12 to 1. My timings has been changed. So today I am taking 2 hours class, and from tomorrow also I am with you people for another 2 hours. So I'll be taking 12 to, just a second, let me confirm the timings once again before I make a mistake. 1 second. Okay. So I'll be with you students 12 to 2 every day, Monday to Friday. I'm taking 2 hours class with Hello English, 12 to 1, first one slot, and 1 to 2, the next slot. So in any of the slots, it's not the same thing. It's going to be different teaching. So it's not that you should come for 2 hours. I'm not forcing you to do that, but try and make it. I am making myself available for you people to whatever time possible for me. So from Monday to Friday, I'll be there from 12 to 2. It's a Saturday. Saturday, I'll be coming only at 11 o'clock, but due to some requirement, I'm taking 12 o'clock also today, only for today. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ रोज आऊंगी 12 बजे, लेकिन 12 से 1 एक स्लॉट है और 1 से 2 मेरा दूसरा स्लॉट होने वाला है. तो मैं आपके सामने मंडे से फ्राइडे 2 घंटे के लिए आपके साथ में हूँ, लेकिन शनिवार के दिन सिर्फ 11 बजे की क्लास रहेगी. लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं सेशंस बढ़ाऊंगी, जैसे आज मैं 12 बजे फिर आपके साथ जुड़ने वाली हूँ. ओके, लेट्स गो अहेड. सो इज किरण रेडी विद अस? This is good news for us, ma'am. Yes, ma'am. सीरियसली, मैं तो सोच रही थी सब कहेंगे मैम बोर हो जाएंगे आप इतना बोलोगे तो. Hare Krishna. I was seriously when they were asking, I said my children are going to run away. They'll say, Baba, इतना बोलती है, बस. Still, that's something good that you have said. Thank you so much. Kiran, would you like to come forward? Yes, ma'am. Karan, this is Amy. Have you met each other before? Okay. Karan, this is Amy. Have you meet नहीं है बेटा, देखो MET लिखा है ना वो. Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. And what do we call that? MET? Yes. MET. क्या Yes, बोलेंगे ma'am. उसको? Have you met each other before? Absolutely correct. Have you met each other before? अब यहाँ each other कौन है? करण और एमी के लिए हम काम में ले रहे हैं एक दूसरे को. Each Yes, other. ma'am. आइए next. Oneself is used to emphasize that one does something individually and unaided, the idea of. Okay, I know from where you have picked up. So, ma'am, can we use reciprocal when referring to more than people? हाँ, yes, Sana, you can use it, but that will be oneself. फिर वो one another वाला जो आपने काम में लिया है, वो आप काम में लेंगे 1 से 2 से ज्यादा के लिए, और सिर्फ 2 जने हैं तो उसके लिए हम काम में लेते each other. Okay, I think that's something which we have to keep in mind. Is Bharat said with me? Come Bharat, I was calling you only. Come. या मैम, मेरा हाँ. क्वेश्चन था, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि आई डिड इट माई सेल्फ या आई कुक्ड इट माई सेल्फ, तो इसकी जगह पे हम कभी कभी ये भी यूज करते हैं. एक सेंटेंस है आई बाई ओन, तो मैम बाई ओन वो क्या ये रिलेटेड प्रोनाउन होगा, स्पेशल प्रोनाउन होगा क्या? No. By own कैसे बोलोगे? सेंटेंस बताओ जरा एक बार. By own, I cooked by own. या मैम, आई डिड इट बाई ओन. I did it by myself. यही तो हमें सीखना है भरत. जब आपने कोई भी अगर अचीवमेंट भी किया है या आपने खाना चली, अचीवमेंट ही है ना. देखिए मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ, जितने सालों से बना रही हूँ, फिर भी कोई चीज अच्छी बनती है तो बड़ी खुश होकर कहती हूँ अरे ये काम तो मैंने खुद नहीं किया है. तो यही तो रिफ्लेक्ट करना है, यही तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम है. ओन करना is no way reflexive pronoun. That's a wrong that you are using it. तो आज से तो उसको तो बंद कर दो. और जब कह रहे हो कि मैंने खुद ने ये किया है, तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो I के लिए, क्योंकि तुमने I काम में दिया है, तो फिर I के साथ आपको क्या याद रखना है? Myself. मैम, ठीक है.
himself. हाँ, मैम एक बात और कहना चाहूंगा। तो बताएं। आप अभी बोली है कि मैंने ज्यादा बात करता हूँ। मैम वो आप ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि आपने जैसे हार्ड वर्क करते हो ना, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। और मैंने देखा है, आप जब बीमार थी, तबीयत ठीक नहीं था, तब भी आपने छुट्टी नहीं ली। अपने अपना काम को गॉड मानते हो, भगवान मानते हो। हम सबकी दुआ आपके साथ है मैम। आप जैसा टीचर ने कहीं भी नहीं देखा। और आप हिंदी या इंग्लिश में इतना फ्लुएंट हो, इतना तजुर्बा है आपको, कमांड है इंग्लिश के वर्ड और सेंटेंस के ऊपर, भाषा के ऊपर। लोगों के साथ कैसे घुल मिल जाते हो, और पूरा परिवार जैसा बंधुत्व जैसा मतलब व्यवहार है आपका। मैं वर्ड में बयान नहीं कर सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। ठीक है मैम। मैं काम पे जाता हूँ ना, मैं आपका क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं ऑफलाइन सुनता हूँ आपको। और जब मुझे मौका मिलता है, मैं आपका क्लास में आ जाता हूँ। मैम आप बहुत अच्छी हो। ठीक है ना। आप ऐसा Thank you. मत सोचिए कि बहुत बात करती हो। Thank वो आपका you. ड्यूटी Thank है। you. जी Thank मैम, you so थैंक यू। much. Thanks a lot for this appreciation. This is for you, Bharat. Thanks a lot. Let's go to the next and इसको थोड़ा फ्री करते हैं, चाय पानी पी लीजिएगा, थोड़ा बीच में ब्रेक हो जाएगा. Have you looked at yourselves in the mirror? You yourself. Now there, मैं एक सवाल पूछती हूँ आप सबसे. यहाँ जो सही जवाब आया है वो कौन सा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? What is it? The answer which has come off page 18, can somebody tell me this is singular or plural form? मैम पुलर। How did you come to know that, Sumit? मैम Yes. क्योंकि इसमें बोला जा रहा है ना योर सेल्फ हाँ, तो नहीं बोला जा स्पेलिंग रहा को, सुमित स्पेलिंग को हाईलाइट करो. है। यस मैम। वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी कि अच्छा प्लूरल की बात हो रही है. SELVES ही लगाना है, ये गलती से Yes, F ना ma'am. लगा दे. That's something which we have to keep in our mind. Okay, आइए, let's go to the next. This is the 19th slide, students. I'll give you a break for 5-10 minutes so that we can sit again and come back and learn again. So first time I'm joining, I feel very good. Who is this? Sham, thank you so much for joining and I really appreciate it. Pratap, noun is singular, verb is plural. किसकी बात कर रहे हैं? Pratap, which मैम sentence? नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहता है ना, उसको वो एस एस लगा के बनाते हैं ना इसको, नाउन को वो क्या नाम प्लूरल बनाते हैं। तो और वर्ब हमेशा प्लूरल होता है तो उसको सिंगल एस लगा के बनाते थे। मैं बात नहीं समझी क्योंकि प्रताप अगर आपने नाउन को जैसे प्लूरल किया, गो है ना, गो तो गो मतलब जो, तो ये वर्ब है तो सिंगुलर है, ये प्लूरल है तो ईएस लगा देते, गो कर देते हैं। वो बात बताओ। अच्छा वैसे कहना चाह रहे हो आप, हाँ लेकिन हाँ, इसमें ना ओके मैम। प्लूरल नहीं हुआ वो प्रताप. इसको थोड़ा दिमाग में और खुद के लिए भी सही रखिए. नाउन जैसा भी है वैसा ही वर्ब होगा. आप अपनी मर्जी से शिफ्ट नहीं कर सकते. नाउन अगर सिंगुलर है तो ओके वर्ब मैम, ओके मैम। सिंगुलर ही होगा, है ना. वो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी. वो तो आप मेरी सारी मेहनत खराब करोगे, ऐसे नहीं चलेगा. ओके, राबिया कॉपी पेस्टेड फ्रॉम गूगल मैम. यस, लाइटनिंग मैं यही बोल रही थी, सब वहीं से ले लिया है. Okay, Disha Srivastav, if you like the class, it's okay with me, and I'm really very happy with such beautiful comments. I don't know, it's you are flattering me. I don't know, but I have really got flattered here. Yes, Krishna Reddy, will you please come forward? You Reddy, should stop. You should stop blaming each other and take responsibility for what happened. very important, very, very important it is. I think we have been taught in our schools also, the teachers inside and outside around us have always taught us this, each other. Take the responsibility. Very well used here, the reciprocal part. This is the 20th slide, students. Okay. Manju, will you please come forward? Manju Yes, Patel, ma'am. आइए. We like each other's name. We like each other's name. अच्छा. अब मंजू, किरण, आदित्य, कृष्णा, चारों आ जाओ. All 4 of you come together. आपने Yes, सेकंड वाला क्या सोच के लिया ऑप्शन? एक्सीडेंटली हो गया। yes, मैं मेरा भी Mistake, ma'am. मिस्टेक में एक्सीडेंट हुआ कैसे? जल्दी में थे, वेरी बिग पॉइंट मिस्टेक। लेना चाहते थे. हाँ. या अब ये बहुत बड़ी, मैं बार बार इसीलिए रेफर कर रही थी, वो जो चिल्ड्रन का जो लोग गलती कर बैठते हैं ना,
और फिर वही गलतियां आगे तक चली जाती है एंड बिकम्स वेरी नॉर्मल. चिल्ड्रन को चिल्ड्रन से तो लिखते हैं मैम. somebody was saying me yesterday this. डोंट मेक दैट मिस्टेक, है ना. अब हम याद रखेंगे कि पोजेशन शो करना है तो हमें ईच अदर के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाना है, फिर एस लगाना है. डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लगा सकते, इट्स रॉन्ग. ओके, वी लाइक ईच अदर्स नेम, एक दूसरे का नाम. नाम तो मेरा पोजेशन ही है ना भाई. ओके, प्रताप प्लीज कम. हेलो. हेलो. I think we have met before, haven't we? Okay, I think we have met before, haven't we? It's a very beautiful direct statement to somebody. Even when you try to flatter somebody, Pratap, ये normally वो हिंदी movies में नहीं आता है. आपको नहीं लगता हम कहीं मिले हैं पहले? You remember it? एक हीरो हीरोइन से ये चीज जरूर बोलता है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी में बोलने में भाव आपने बिगाड़ दिए उसके. Don't you think we have met before, so that you can start a conversation? So boys and girls, you can use this for yourself if you're really trying to talk to somebody. That's all for today, students. I hope I am able to help you with the pronouns. थोड़ी boring class आगे रहेगी, pronoun से related ही रहेगी. मैं topic भी आपको बता देती हूँ that we are going to talk about. अब आपका आएगा relative pronouns. तो हम एक बार pronouns को पूरा खत्म करना चाहते हैं. So अभी 12 बजे मैं आपके साथ 5-7 मिनट में फिर से जुड़ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आ जाइए. हम बता देते हैं क्या क्या है, हमारे क्या पॉइंट्स रहे हैं. प्रताप, क्या बात है, 68 पॉइंट्स, शाबाश. Sumit 57, Krishna 56, Aditya 50, and Avni 45. Kudos to you. Very good, Pratap. Keep it up. I'm sharing the pro invite with all of you students. VEENA 1010 is the code that you require this. I am going to join you within 5 minutes again for the class, which is going to be from 12 to 1. Updating all of you students, I'll be available daily for 2 hours with you. So 12 to 2, you can just finish up all your things. I think morning hours, you can get free yourself by 11:45, 11:50. Keep your notepads ready. And then from 12 to 2, those who are at home, those who can take out time, please do come and join my classes. This is Veena signing off from Hello English. I'll be joining within 5 minutes again. Bye-bye, all of you.